शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातिदरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुगमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः सत्नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वबोधहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतिथितीर्षदां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनां मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम। भूतेर्महद्भिर्या इमा पुरो विभुर्निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेवते तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अद पञ्चविंशतितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तस्य मूलदेशे त्रिंशद्योजन सहस्रान्तर आस्ते य कला भगवत् तामसी समाख्यादानन्द इति सात्वतीया दृष्ट्यदृश्ययोः सङ्घर्षणम् अहति अभिमानलक्षणं यं सङ्घर्षणमित्याचक्षते यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतो नन्दमूर्तेः सहस्रशिरस एकस्मिन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते यस्य हावा इदं कालेन उपसन्निहीर्षदो मर्षविरचित रुजिरभ्रमद्रुवोरन्दरेण साङ्घर्षणो नाम रुद्र एकादशव्यूह त्रक्षरस्त्रीखिलं शूलमुत्तम्बयन्न उदतिष्ठत यस्याङ्घ्रि कमलयुगलारुणविशद नख मणिषण्डमण्डलेषु अहिपतयः सह सात्वर्तर्षभै एकान्तभक्तियोगेन अवनन्दमदन्दः स्ववदनानि परिस्फुरल् कुण्डलप्रभामण्डित गण्ड स्थलानि अधिमनोहराणि प्रमुदितमनसः खलु विलोकयन्ति यस्यैव हि नागराजकुमार्य आशिष आशासाः चतुर्वाङ्ग वलय विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुजिर भुजर रजत स्तम्भेष्वम् अरुचन्दन कुङ्कुम पङ्गानुलेपेन अवलिन्वमाना तदभिर्वर्षननोन्मदित हृदय मकर ध्वजावेश रुजिर ललित स्मितास्त तदनुराग मददुमिद मदविकूर्णिदारुण करुणावलोक नयन वदनारविन्द सव्रीडं किल विलोकयन्ति स एव भगवान् आनन्दोऽनन्दगुणार्णव आदिदेव उपसंहृत तामर्षरोषवेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते ध्यायमान सुरासुरोरग सिद्ध गन्धर्व विद्याधर मुनिगणै हिदरवद मुद मुदित विकृत विह्वल लोचनः सुललित मुखरिग अमृतेन प्यायमानः
स्वपार्षद विबुध यूदपदिर् अपरिम्लानवराग नवदुल्लसिकामोदमध्वासवेन माद्यन्मधुकर व्राद मधुगीत श्रियं वैजयन्तीं स्वां वनमाला नीलवासा एककुण्डलो हलगकुदी कृतसुभगसुन्दरभुजो भगवान् महेन्द्रो वारणेन्द्र इव काञ्चनीं कक्षामुदारलीलो बिभर्ति य एष एवम् अनुश्रुतो ध्यायमानो मुमुक्षूणाम् अनादिकालकर्मवासनाग्रदिदम् अविद्यामयं हृदयग्रन्थिं सत्वररजस्तमोमयम् अन्तर्हृदयं यद आशु निर्भिनन्ति तस्यानुभावान् भगवान् स्वायम्भुवो नारद सह तुम्बुरुणा सभायां ब्राह्मण संश्लोकयामास उत्पत्तिस्थितिलयहेदपस्य कालकल्पाः सत्त्वाद्या प्रकृतिगुणा यदीक्षणाय सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानादात् कदमोहद्वेद तस्य पद्मा मूर्तिं न पुरु कृपया बभार सत्त्वं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र यल्लीला मृगवधिराददे अनबाध्याम् आदातुं स्वजनमनांसि उदारवीर्यः यन्नामश्रुतमनुकीर्तयेद तस्मात् ओर्ता वा यदि वदित प्रलम्बनाद्वा अत्यन्तं सपदि नृणामशेषमन्यं कं शेषात् भगवद आश्रयेन् मुमुक्षुः मूर्धन्यर्पितमनुवस्य सहस्रमूर्ध्नो भूगोलं सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम् आनन्द्यादनिमिद विक्रम्यां भूम्नः को वीर्याण्यधिगणयेत् सहस्रजित्स्वः एवं प्रभावो भगवानन्दो दुरन्तवीर्योरुगुणानुभावः मूले रसाया स्थित आत्मतन्द्रो यो लीलयाक्ष्मां सितये बिभर्ति एदा हेवेय नृभिरुपगन्तव्य गदयो यदा कर्म विनिर्मिता यदोपदेशम् अनुवर्णिताः कामान् कामयमानैः एतावदीर्हि राजन् पुंसः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विभागदयः उच्चावच्चा विसदृशा यदा प्रश्नं व्याचक्ये किमन्यत् कथयाम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भूविवरविद्यूप वर्णनं नाम 15तमोऽध्यायः। थैंक यू।